हरियाणा सरकार ने बताया है कि 72 विदेशियों सहित 500 लोग दिल्ली में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। असम में भी जमात में शामिल हुए 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मणिपुर सरकार ने भी ऐसे 10 लोगों की पहचान की है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन पूरी तरह और सख्ती से लागू करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन से छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन से कोविड-19 को फैलने से रोकने का उद्देश्य हासिल नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को अगली क्लास में भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों को अब तक के प्रोजेक्ट कार्य, आवधिक और अन्य परीक्षाओं सहित स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षाओं में भेजा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के कारण गैर सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 61 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। पिछले महीने सिलेंडर की कीमत में 53 रुपए की कमी की गई थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के हिंदी और अंग्रेजी के सभी 5 मिनट के बुलेटिन कल से 10 मिनट के होंगे। उर्दू बुलेटिन का समय सुबह 9 बजे और रात 9 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Vaibhav Jyotsna Srivastava. The government today said positive cases of coronavirus in the country has increased and states have been asked to launch intensive drive to trace the suspected contacts. Briefing media in New Delhi, Joint Secretary in Health and Family Welfare Ministry Love Agarwal said movement of the people associated with Tablighi Jamaat at Nizamuddin in the national capital has increased the number of cases in the country. Mr. Agarwal said 1,800 people have been hospitalized and sent for quarantine. He appealed that religious congregations should be avoided and social distancing should be adhered during the lockdown. Mr. Agarwal said Railway is preparing more than 3 lakh isolation beds for which work has been started to modify 20,000 coaches. In view of COVID-19 outbreak, the Central Board of Secondary Education CBSE will conduct class 10 and 12 examinations only for 29 main subjects which are crucial for promotion and admission to higher educational institutions. Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank said he has advised the board in this regard. He said for the rest of the subjects, CBSE will not hold board exams and instructions for their marking assessment will be issued soon. The government has come across reports in a section of social media which purportedly claims that Indian citizens are safe because of microRNA in their genome. The report misinterprets the work carried out at the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology in this regard. This is a fake news. No such claim has been made by the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB, that a microRNA is unique to Indians as mentioned in the video. No analysis of DNA or RNA of patient samples as mentioned in the purported video audio has been carried out by the Delhi-based group at the ICGEB in this regard. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today announced 1 crore rupees for the families of healthcare personnel if they lose their lives while dealing with COVID-19 cases. The personnel include all sanitation workers, doctors and nurses from private or government sector, be it temporary or permanent. Interacting with doctors through video conferencing, Mr. Kejriwal termed their contribution as no less than a soldier and saluted their courage and dedication. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia today said the entire building of Alami Markaz of Nizamuddin has been evacuated this morning by conducting a 36-hour intensive campaign. In a tweet today, Mr. Sisodia appreciated the efforts of medical staff, administration, police, DTC staff who worked together in this 36-hour operation, putting their lives at risk. From tomorrow, News Services Division of All India Radio is extending all 5-minute bulletins of Hindi and English to 10 minutes. The timings of Urdu bulletins will be 9 a.m. and 9 p.m. Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank has instructed the Indian Institute of Technology IITs to ensure that they should conduct active
research work in the area of COVID-19. Mr. Nishank said this while chairing a meeting with all the directors of 23 Indian Institutes of Technology through video conferencing in New Delhi today. He said the research work which is already being done should be given wider publicity in the social media and other mediums. The price of non-subsidized 14.2 kg LPG was today slashed by 61 rupees and 50 paise per cylinder in line with the fall in benchmark international rates. With this, the new rate of non-subsidized LPG cylinder will be 744 rupees in Delhi. This is the second reduction in the rate since March this year as per the price notification issued by Indian Oil Corporation. On 1st of last month, non-subsidized LPG price was cut by 53 rupees per 14.2 kg cylinder. Cooking gas is available only at market prices across the country. Eligible users, however, get subsidy in their bank account for buying LPG cylinders at subsidized rates. Besides, the price of 19 kg LPG cylinder used by commercial establishment also came down to 1285 rupees from 1381.5 rupees in the national capital. Government is regulating 24 classes of medical devices as drugs for quality control and price monitoring. These medical devices have been notified and regulated as drugs under Drugs and Cosmetics Act 1940 and Drugs and Cosmetics Rule 1945. For remaining non-scheduled medical devices which are notified by regulated and drugs, National Pharmaceutical Pricing Authority is currently monitoring. And that is the end of this news bulletin. Akashwani Guwahatir FM Mohabahu Aru Pragjyothipur. বুজিছা প্ৰিয়ম ঘৰৰ সকলোৱে বাহিৰত পঢ়াৰ কথা কয় তুমি পিছে কি কোৱা আগতে মনে মনে আছিলো এতিয়া কিন্তু কৈ দিওঁ জানা কি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টত মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইমানবোৰ ভাল ভাল শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে কেলেনো বাহিৰলৈ যাব লাগে কোৱাচোন কিছুমানে যে কিয় কথাটো বুজি নাপায় এতিয়া ইউএছটিএমৰ কথাকে চোৱাচোন ইউএছটিএম মানে ইউনিভাৰ্চিটি অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি মেঘালয়া আমি যে সিদিনাখন গৈছিলো ইউএছটিএমত কি নাই কোৱা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনিটো আছে তো দূৰৈতে নহয় গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ বাটহে ইউএছটিএম হৈছে ইউজিচিৰ দ্বাৰা স্বীকৃত উত্তৰ পূৰ্বৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সৰ্ববৃহৎ ইউনিভাৰ্চিটি 24 ঘণ্টাই অবিৰত আপোনালোকৰ সেৱাত ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন কোভিড-19 নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ এই কক্ষ কোভিড-19 সম্পৰ্কীয় যিকোনো তথ্য তথা সহায় উপলব্ধ এজন যুটীয়া সচিব বা উপসচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ নিৰীক্ষণত এনডিআৰএফ এছডিআৰএফ এপিআৰও অসম আৰক্ষী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সেৱা এই কক্ষত উপলব্ধ সকলো জিলাতে জিলা জৰুৰীকালীন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ উপলব্ধ ৰাজ্যৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ বাবেও তথা যিকোনো জৰুৰীকালীন সহায় খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ এই নম্বৰত 0361 2237219 094010444617 WhatsApp number 7637012692848603598 toll free number 1070 আৰু 1079 জিলা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1077 কোভিড-19 সম্পৰ্কে যিকোনো খবৰৰ বাবে ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ 104 বা টোল ফ্ৰী নম্বৰ 6913347770 নম্বৰলৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত হাসি বা কাহ হলে মুখমণ্ডলত আৱৰণ নলোৱাকৈ নাকাহিব অথবা হাসি নামাৰিব আপুনি জ্বৰ বা কাহত ভুগি থাকিলে কোনো লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহিব আপোনাৰ চকু মুখমণ্ডল নাক আৰু জিভা স্পৰ্শ নকৰিব আক্ৰান্ত ৰোগীয়া লোকৰ ওচৰলৈ নাযাব নিজাববীয়াকৈ দৰৱ গ্ৰহণ নকৰিব